Difference between knowledge and skill. Knowledge is the theoretical or practical aspect, whereas skill is the proficiency you develop through training. Knowledge is acquired through learning or experience, whereas skill is practiced or learned behavior. Knowledge is knowing how to bake a cake, whereas skill is having a baking or cooking skill. बेसिक डिफरेंस नॉलेज और स्किल में यही है कि नॉलेज लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू एक इंडिविजुअल में आता है, जबकि एक स्किल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इंफॉर्मेशन refers to data about someone or something. Knowledge is the combination of information, experience, and insight. Not all information is knowledge, whereas all knowledge is information. Transfer of information is simple through internet, TV, people, etc. Transfer of knowledge is hard in comparison of information, as it requires learning. Information is theory-oriented, whereas knowledge is experience-oriented. Information alone isn't enough to form conclusion, whereas knowledge is relevant information with the help of which conclusion can be drawn. In short, information का मतलब होता है किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना या फिर न्यूज़ सुनाना, या फिर किसी को या आपको बताई गई बात को इन्फॉर्मेशन कहते हैं. और नॉलेज उसे कहते हैं जैसे जो हमारे आसपास है उसके बारे में जानना कि वह कैसा है, क्या है, उसके बारे में अनुभव करना, उसको नॉलेज कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ. Belief is a personal statement, whereas truth is an universal statement. Belief is subjective and personal, whereas truth is objective and universal. Belief is based on acceptance, faith, and opinion, whereas truth is based on fact and reality. Belief can be changed, whereas truth cannot be changed. Belief is imaginary, whereas truth is authentic. बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आस्था होना, अपना फेथ और विश्वास दिखाना, जो कि कभी भी चेंज किया जा सकता है. और ट्रुथ होता है सच्चाई, जो कि यूनिवर्सल होता है और कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग इज theoretical, whereas training is practical or concrete. Aim of teaching is understanding, whereas aim of training is doing. Teaching is related to long term, whereas training may be short term or immediate. Teaching focuses on education and knowledge, whereas training focuses on skills and abilities. Teaching takes place in classroom environment, whereas training takes place in work environment. Teaching is an academic activity, whereas training is a learning process. So, in this video, we came to know about differences between knowledge and skill, information and knowledge, belief and truth, and last, between teaching and training.